Welcome to my channel IELTS Without Effort. And those who do not know me, I'm an ex IELTS examiner, and this is the real IELTS exam question, task 2, that appeared on the 11th March evening slot, right? So it is task 2, and you will get 8, rather this is a 9 band answer, I must tell you. So you can compare, it's a 9 band answer. Yeah, so generally I say it is 8 or 8.5, but this is a 9 band answer, of course. And see how fluid it is, the flow. आप flow को देखें किस तरह से मैंने explain किया है, okay, and it is so easily expressed. And मैंने partial side लिया है, so that बेटा you can know both sides. Though I was in favor of one side, but I have taken a partial view so that you come to know the ideas of the both sides. Okay, तो दोनों sides का आप देख सकते हो, and it is a 9 band answer, and you will see it is so simply and so fluidly written. आप देखेंगे. So let's, and of course beta, my WhatsApp number is this, and my online classes are there. So all over the world I have students, there is no problem, and you will get a genuine guidance. And for those, there's an announcement on 12th March beta, I have a seminar coming. You can WhatsApp me at this number and I'll send you the link, because if you have the link you can get a discount. Okay, so I have a seminar where I will tell you how you can evaluate your essay or your writing yourself. Yes, आप खुद कर सकते हैं. अरे कुछ तो आइडिया हो सकता है आपको. Okay, so you must attend this, and बेटा 9 PM है Indian Standard Time, right? It is IST because all of you all over the world. So it is 9 PM IST and it is a Sunday. Please, अगर आप, if you are serious about IELTS, अगर आप serious हो तो जरूर करो और evaluation खुद करो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. Okay, so let's go to the question. Very easy one, but then partial. 9 band. Some people argue that it is better to be unemployed, कि कोई job ही ना करो, than to be employed in jobs they do not enjoy. अगर आप अच्छा नहीं लगता आपको job करना ही नहीं चाहिए. To what extent you agree? Disagree, right? Now the introduction. There are several seekers for a perfect occupation, है ना. लोग कहते हैं कि हमें तो perfect occupation हो, जहाँ पे हमारा दिल भी लगे और हमको सैलरी भी मिले. That is called a perfect occupation. मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ ना तो लॉन्ग हो जाती है. आई डोंट नो हाउ डू द पीपल टीच. 5 मिनट में कैसे पढ़ा के चले जाते हैं, मेरे को नहीं समझ में आता. 36 ईयर्स हो गए हैं बेटा पढ़ाते हुए, बट ये आई वॉश नहीं करना आया, ये सीखना पड़ेगा. ओके, पीपल बिलीव दैट इट वुड बी ग्रेट टू बी जॉबलेस देन टू बी एम्प्लॉयड समवेयर विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू चॉइस. ये मेरा पैराफ्रेज किया है, ठीक है जी. ये मेरा जनरल स्टेटमेंट है, तो याद रखा करो जनरल पोस्ट ऑफिस. ओके, ये अब मेरा ओपिनियन आ गया. आई पार्शली एग्री विद द स्टेटमेंट एंड विल शेयर माई ओपिनियन इन द एसे विद रेलिवेंट डिटेल्स. नाउ अगेन द बॉडी पैराग्राफ 1. ऑन वन हैंड, ये जान के लिखा है मैंने, क्योंकि ऑन द अदर हैंड मैंने दूसरे पैराग्राफ में लिखा है. मैं फटाफट कर रही हूँ, पता नहीं कैसे करते हैं आई वॉश, आई डोंट नो. Having a job that people are not interested in can have numerous, ये देखो, detrimental ramifications. लो भाई, ये तो आप कहीं पे भी कॉपी पेस्ट करो, पूरे वीडियो देखो तो पता चलेगा ना. फर्स्टली ये देखो, लिंकिंग वर्ड कोहिजन. अब ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी तो बड़ा होता है. देयर वुड बी लेस कंसंट्रेशन एट वर्क इफ सेंटेंस the task is not according to one's interest. Naturally अगर interest नहीं हुआ तो concentration कहाँ आनी है. Moreover, ये कॉमा भूलो नहीं. The incidence of mistakes while performing the task are numerous. गलतियाँ भी उतनी करोगे क्योंकि interest ही नहीं है. For instance, ये बेटा, ये मेरे typing, I am not very good at that. For instance, almost every project is invested with the high amount थ्रू द क्लाइंट. खूब सारा अमाउंट उसमें डालता है प्रोजेक्ट में. क्लाइंट एंड मीन्स क्लाइंट.
So if the person is not able to focus, then it might lead to financial loss. तो अगर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे, तो आप क्लाइंट को लॉस करवाएंगे. सो इट्स कंटिन्यूड. देन फर्स्टली मैंने बोला था ना, अब मैं सेकेंडली जान के लिख रही हूँ ताकि मैं लिंक करूँ इस पैराग्राफ में. ओके, एंड देन द कॉमा. देयर विल बी फ्यूअर चांसेस ऑफ करियर ग्रोथ. नेचुरली आपका करियर कहाँ से ग्रोथ होना है जब आपको दिल ही नहीं लगना. ग्रोथ इफ अ पर्सन कीप्स डूइंग द एफर्ट विच ही डज नॉट लाइक. वो एफर्ट वहां डाल रहा है जहां पे उसको मन ही नहीं. सेकेंडली, देयर विल बी फ्यूअर चांसेस ऑफ करियर ग्रोथ इफ अ पर्सन keeps doing effort which he does not like. I have already explained. Besides or apart from that, there would be less chances of promotion in workplace which is cumbersome, means जो बहुत आपको burden है. coupled with, ये देखो and नहीं use करना, and नहीं use करना, coupled with, together with boredom and dissatisfaction. ये देखो. okay? सो इसमें आपका लेक्सिकल भी हो गया और आपका रेंज भी हो गया. चलो, सो इफ यू वांट दिस पैकेज you can WhatsApp me and you can Google Pay and WhatsApp me and I will send you on your WhatsApp number. Yeah, this is for academic. फिर बेटा आप एक्चुअली ये 999 का हो जाएगा. It is actually like that and because it is genuine, it is not वो 150 वाला. And then this is the general. You should take the whole package so that you can do it very nicely and then again it will become, it is 899 the real price. So at present to the body paragraph 2. On the other hand, having a profession is an essential part of life as it helps to earn a livelihood. Okay, so there should be a full stop here. Just not put that full stop. Sorry. First and foremost, no employment would be more dangerous as no work could lead to starvation and poverty. है ना, भूखे मर जाओगे. Furthermore, if there is no earning, then it would be more difficult to arrange the food. To illustrate, if there is no earning member in the family, it would become difficult for him to feed his. There would be a loophole in the resume if the individual decides not to work until the desired job is available. Naturally उसमें gap पड़ जाएगा resume में. Hence there would be a huge disadvantage due to gaps or lack of stability because of not getting employed in profession of choice. Naturally gap and lack of stability हो जाएगा and a person अगर आप job लेने जाओगे they will not like it. Okay, so the conclusion, to conclude, although, ये देखो sentence although वाला, being in a job that is joyful makes a person more focused. Naturally a focus ज़्यादा करेगा. However, ये देखो punctuation and जान के मैंने however बीच में लगाया sentence के. Working for the basic needs cannot be ignored. है ना, आपको food, shelter और कपड़ा तो चाहिए ना. So I think people should decide according to the, this is small, demands of the situation in which they may find themselves, and this is a 9-band range and answer. So if you want your desired band, you can study at home online with an ex-IELTS examiner. I teach myself, and please give the notification button so that you can receive notifications, and thank you very much.